हेलो लर्नर्स, दिस इज योर फेवरेट एजुकेटर केपी सर। आज हमारा गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग पेपर कंप्लीट। सो हर एक स्टूडेंट से हमको मैसेज आ रहा है, इतना खुशी से आ रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। और हर एक क्वेश्चन बन गया, पेपर इज इतना आसान हो गया ऐसा बोल के बहुत खुशी से मैसेजेस आ रहा है हमको। सो लास्ट ईयर क्या हो गया, लास्ट ईयर आईआईटी कानपुर पेपर, आईआईटी कानपुर पेपर का वजह से एनवायरमेंटल पेपर लिखने के बाद हर एक स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन में चले गए। अभी ऐसा नहीं, आईआईएससी पेपर लिखने के बाद एवरी स्टूडेंट सेंडिंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस, खुशी से मैसेज कर रहे हैं। हर एक स्टूडेंट से हमको गुड न्यूज़ आर कमिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रोट द पेपर वेरी वेरी वेल, and from the students opinion the paper is easy to moderate level, not very tough, not at all, even moderate also, just 1 2 subjects only, not all the subjects. Obviously as a civil engineer we are going to prepare only those related concepts for the gate environmental science and engineering paper. As a civil engineer we are preparing our related subjects. We left with physics, chemistry, microbiology, and some environmental impact assessment. So around some 25 to 30 questions we are going to left it. No, 25 to 30 marks we are going to leave it. Okay, besides that, students who prepared for only civil paper, math, apti, environmental, air pollution, solid waste management, FM, hydrology, irrigation, all water subjects, ये बहुत खुशी से बोल रहा है 40 to 45 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड out of 65 questions. As a civil engineering student, attempting 40 to 45 questions in environmental science and engineering paper is obviously it is a perfect good sign. And इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे ये पेपर का बारे में, क्वेश्चंस आर स्ट्राइट अवे इजी, नॉट दैट मच ट्रिकी मॉडल्स, इतना ट्विस्ट नहीं है, एक्सपेक्टेड मॉडल से क्वेश्चंस आ रहा है. So because why I am talking about it बार बार, you are in tension. लास्ट ईयर आईआईटी कानपुर इतना टफ दिया हमको, इस बार आईआईएससी क्या करेगा? So this is a positive sign to every student who are writing paper tomorrow, civil engineering paper. It's obviously a positive sign for you. Your next civil engineering paper also in the same pattern or same model it is going to be happening. So students are very clearly they said paper is easy to moderate, no doubt, and all expected questions, all known questions, and all questions solved in the class, solved in the question test series, most expected series, all questions are coming. I will discuss subject by subject what are the models they have given. We will discuss detailed. But the twist over here is around 14 MSQ questions, 19 NEAT, 32 MCQ. So this is only the somewhat pinching for us. We are having 14 MSQ, but don't expect the same for civil engineering paper. Why? Because environmental paper is completely somewhat related to physics, chemistry, biology, environmental impact, theoretical. They can incorporate more MSQ. But a civil paper, we have lot of subjects, technical related subjects. We can't expect, we may expect 50%, 7 or 8 questions, MSQs in tomorrow's civil paper. So, but ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. Focus on how to tackle with MSQs, because today paper 14 MSQs, tomorrow at least 7 या 8 MSQs मिल जाएगा आपको. और so questions coming from aptitude are a bit tough. Questions coming from aptitude, engineering aptitude, a bit tough. Out of 15 marks, 10 questions, 3 questions are tough, remaining are easy. Out of 10 in aptitude, 2 questions from verbal ability English, remaining 8 from aptitude. That aptitude 3 questions out of 8, 3 questions are very tough, remaining easy. And
a good sign and good intention for us, that is engineering math is easy, very easily given. Every student answered each and every question from engineering mathematics. So this is a good sign. We worried about engineering math. Most of the students from diploma, they are worrying regarding engineering math. Engineering math straight away questions only, no tricks and twists. So coming from technical questions, from air pollution around 8 to 9 marks came only from air pollution. 6 questions are coming, 8 to 9 marks, 5 or 6 questions, 8 to 9 marks students are saying. So secondary air pollutant, they are asking about which of the following is a secondary air pollutant or which of the following is not a secondary air pollutant. Such model of question. And then pH mix, environmental engineering, water supply, na? pH of industry A, pH of industry B, what is the resultant? Both waters are mixed. What is the resultant? Mix pH value. Rainfall depth calculation, diagram graph given. From the graph you need to draw the diagram. Sorry, you need from the diagram you need to determine the rainfall depth. So hydrology, this is from hydrology. And permeability of, see, this is a surprising environmental science paper. They are giving geotechnical permeability question, where we are having permeability question from geotechnical engineering. And very important, if you have a good basics of 12th chemistry questions are also easy. Some students told me by comparing the units, 3 chemistry questions are आसान हो गया. सो आप दिमाग से सोचने के बाद, ये हम ये बार बार बोल रहा है, आप दिमाग से सोचने के बाद हर एक एग्जाम को 10 क्वेश्चंस आसान से हो जाएगा. इतना सब्जेक्ट नॉलेज डेप्थ नहीं चाहिए, ऐसा बोल दिया ना. आउट ऑफ 65 10 क्वेश्चंस यूनिट कन्वर्शंस और कॉमन सेंस ऑप्शन एलिमिनेशन से चलेगा. सो केमिस्ट्री क्वेश्चंस आल्सो 3 क्वेश्चंस हो गया. देन मैथ से एगन वैल्यूज, local maxima, probability, distribution function, differential equation, properties of vectors which is linear. These are provided from math. I repeat, eigenvalues, local maxima, probability, distribution function, differential equation, properties of vector which is linear. These are given from math. And MSQs came from air pollution, sedimentation. From sedimentation, types of settling. No teacher will taught this. I told in the class also. Type 1, type 2, type 3, type 4. We made one big table. We explained in detail. Excellent. Beautifully we have explained. And in YT also I made one video on types of settling. So that types of settling, MSQ came. MSQ, types of settling. And hydrology, unexpectedly, total 4 questions came from hydrology. And from fluid mechanics, streamline, streakline concept. And also from fluid mechanics, streamline, streakline concept. Darcy-Weisbach concept से भी formula आ गया. Then I'm checking from the yes, aptitude topics. Aptitude topics are properties, sorry, probability, geometry से आ गया, चार्ट क्वेश्चन आ गया, स्पेशल वन कम डाइस फोल्ड वाला मॉडल, स्पेशल एप्टीट्यूड से डाइस फोल्ड वाला मॉडल, एंड इंग्लिश 2 क्वेश्चंस आर देयर. So other than apti, students regularly I got nearly 42 messages. Students are saying technical and math is easy, थोड़ा aptitude tough हो गया, इतना tough नहीं है. and थोड़ा एक क्वेश्चन आ गया कैलकुलस से मैथ में, थोड़ा टफ है. And there is one Taylor series question also from mathematics. Solid waste management around, again 8 to 9 marks came. One question we have given a ABCD formula. That ABCD formula methane estimation वाला एक आ गया. हमारा शॉर्टकट कार्बन नाइट्रोजन रेशियो से वन क्वेश्चन आ गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से. And one question match the following. And students are saying they got a special help from, we have done na paper 2 के लिए solid waste management special course in plus, the numericals and theory questions, from that as it is just data change से आ गया. Whatever we have done MCQs and
numerical questions from solid waste management. All questions of solid waste management are from that special course only. And also, what is that? Rank and properties of matrix from mathematics, probability distribution function, area under curve. Why again and again I am talking questions? This will help you. You can focus on these topics that may help you in the tomorrow's paper. Tomorrow's paper. Okay. So, आपका पेपर इतना अच्छा हो गया. देखो बेटा, पेपर not as like 2023. 2023 is like a nightmare. But अभी इतना आसान हो गया, easy to moderate हो गया. टेंशन मत ले लो. Then I'm checking for questions, guys. Let me check. One minute. And there is a CMFR, PFR question. Like, I hope in 2018 or 19, one question came CMFR, PFR. Same model, one model they have given, where we are using 1 minus e raised to minus KT formula से ये एक आएगा, that is CMFR, PFR वाला. And unit conversion, air pollution unit conversion, ये वाला एक formula. Then KX लेके permeability one formula. And the sedimentation tank, horizontal velocity by length is equal to terminal settling velocity by depth. वहां से एक क्वेश्चन, 2 marks question. Noise pollution one question, L1 minus L2 से एक क्वेश्चन आ गया. Noise pollution, which is thumb rule, na? 2 sources are there. What is the resultant noise? Thumb rule. एक क्वेश्चन आ गया. And same rectangular channel width, that is one open channel flow question from rectangular channel. Specific energy से MSQ question भी आ गया. That is also. So, all subjects overall covered, na? All subjects. I'm checking what the other students also send. I'm checking, guys. So, most of the students said IASC copied. KPs are multiple select questions. KPs are most expected question series. Test questions. That is what messages I am getting. और क्या बोल रहे हैं? So simple बोल रहे हैं. Students ऐसा बोल रहे हैं, simple. I repeat once. Total 14 MSQ, 19 NAT, remaining MCQ. And don't expect the same MSQ will come in civil paper. Math आसान है. Air pollution, solid waste management को ज़्यादा weightage. 8 to 9 marks from air pollution. 8 to 9 marks from solid waste management. Match the following. MSQs came from both the topics. And also theoretical questions came. And as usual, numerical unit conversion, pollutant concentration unit conversions, secondary pollutant, regarding solid waste management, carbon nitrogen ratio, ABCD formula say methane estimation. So, and hydrology, 4 questions came. Fluid mechanics, 3 questions came. Open channel flow, 2 questions came. So, number of questions when compared to from technical subjects, our subjects, go on increasing when compared to last year. So, wastewater engineering questions also there, increased. Questions are said as per students' opinion. Whatever we discuss in the class, whatever we solved in the class, models are same, values are changing. MSQ are also not this much tough. Just statement अच्छे से पढ़ना चाहिए. स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए. बस स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लो, एलिमिनेट करो ऑप्शंस, निकल जाएगा आसान से. ऐसा बोल रहा है स्टूडेंट्स. सो पहले हमको ये टेंशन है बेटा. पहले हमको क्या टेंशन है? पेपर कैसा आएगा, IIT कानपुर जैसा आएगा या नहीं. ये टेंशन निकल गया ना. ओनली द फोकस इज ओके, आराम से करेंगे. पेपर इतना टफ नहीं, इतना लेंथी क्वेश्चंस नहीं. सिर्फ एप्टीट्यूड में 3 लेंथी क्वेश्चंस है पूरा पेपर में. टोटल 65 में एप्टीट्यूड से 3 लेंथी क्वेश्चन, 1 कैलकुलस टफ प्रॉब्लम, और ज्यादा नहीं. ये सब बोल रहे स्टूडेंट्स. सो हमको इतना स्ट्रेंथ आ गया, पॉजिटिव एनर्जी आ गया. कोई दिक्कत नहीं, हमारा पेपर आसान हो जाएगा. वी आर गोइंग टू हैव ए पॉजिटिव होप दैट tomorrow paper is getting easy, not that much tough. So
Be relaxed, stay cool and calm. Focus on, again and again I am saying this, focus on like Arjuna hitting the bird eye. So Dronacharya is asking Arjuna, आपको क्या दिखा रहा है? What are you going to see, Mr. Arjuna? Dronacharya asking. So many students, huh? They said different. I am seeing plant, I am seeing bird, I am seeing surroundings, I am seeing my friends and Dronacharya. But सिर्फ अर्जुना ऐसा बोल दिया, हमको सिर्फ बर्ड आई लगा दिया. आई एम गोइंग टू सी ओनली बर्ड आई. आप भी एग्जाम लिखने का टाइम पे सिर्फ ये क्वेश्चन पे ध्यान दे दो, प्रीवियस क्वेश्चन का बारे में नहीं, फ्यूचर क्वेश्चन का बारे में नहीं. आज कंप्लीट होने वाला खत्म हो गया ना, ये एनवायरमेंटल पेपर हो गया, छोड़ दो. सिविल पेपर को फोकस करो, सिविल पेपर क्वेश्चन को फोकस करो. व्हाट हैपेंड टुडे, अच्छा हो गया, खुशी है, ओवर एक्साइट मत करो, ओवर एक्साइट मत करो बेटा. देयर इज नो सिंगल मैसेज फ्रॉम एनी स्टूडेंट डिमोटिवेटेड, एवरीवन इज हैप्पी. सो इतना खुशी से चलना पड़ेगा पॉजिटिव वाइब्रेशन से, बट डोंट मेक इट ओवर एक्साइटेड. आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, सिर्फ ये क्वेश्चन को ध्यान दे दो, और प्रीवियस वाला को, फ्यूचर वाला को, एनवायरमेंटल पेपर को. आपका जिंदगी फ्यूचर में रैंक अच्छा आ गया कैसा होगा, बुरा आ गया कैसा होगा, पूरा का पूरा छोड़ दो. यू मस्ट एक्ट लाइक ए रोबोट, यू मस्ट एक्ट लाइक ए इमोशनलेस रोबोट. आपको टास्क दिया, प्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो, हो गया खत्म. 6 को चलो, 6 में सिर्फ 6 का बारे में सोचो, 5th का बारे में नहीं, 8 का बारे में नहीं. ऐसा रोबोट जैसा टास्क लेके जल्दी जल्दी पॉजिटिव एनर्जी से तैयार करो, खुशी से चलो, फटाफट एग्जाम खत्म करो, आराम से करो, प्लान करो. आज 3 घंटा एग्जाम हॉल का अंदर चलने के बाद 3 घंटा कैसा करेंगे, एक पेन पेपर लेके आज लिखो, देन इंप्लीमेंट द प्लान टुमारो. हम ये टूर चल रहे गोवा, सो 1 मंथ बाद गोवा चलने के आज प्लान करेगा, कहाँ कहाँ जगह ढूंढना पड़ेगा, कैसा चलेंगे, कहाँ रहेंगे, पूरा का पूरा सेम. यू आर राइटिंग योर लाइफ टाइम एग्जाम, द डे कम टुमारो इज अवर डे. सो इतना लाइफ टाइम का एग्जाम को चल रहे हैं. अच्छे से सुनो बेटा, आज एक पेन पेपर लेके रात में what you want to do in 3 hours, which questions you are going to write first. 1 mark aptitude, 2 marks math, 2 marks environmental, like that. Just you can plan it. So in your mind, some mind mapping you can made it. So going to exam immediately, whatever your strongest subject, 1 mark questions. पहले 1 mark से भी शुरू करो, आपका strongest subject से करो और aptitude से करो, आसान हो जाएगा. इतना positive energy से धीरे धीरे चलो. So don't bring any negative energy or negative impact into your brain. Don't give any negative inputs. और आज भी रात को इतना ज्यादा टाइम इधर स्टडीइंग में और मोबाइल वॉचिंग में और थिंकिंग अबाउट फ्यूचर पूरा का पूरा बंद करो. by exactly by 9:30 10 o'clock go for sleep. टुमारो जल्दी उठना पड़ेगा, 5:30 5 o'clock और 6 o'clock बस उठना पड़ेगा. यू नीड टू टेक 8 hours डीप स्लीप, साउंड स्लीप, मालूम है ना साउंड स्लीप. सो 8 घंटा साउंड स्लीप आपका ब्रेन को रेस्ट देना पड़ेगा. ज्यादा मत सोचो. बिफोर गोइंग टू स्लीप ऑल्सो गिव पॉजिटिव एनर्जी टू योर ब्रेन and think about you are going to get top rank. Think about you are going to do the exam like anything. टॉपर बन गया बेबू, ऐसा सोच के चलो. टॉपर बन गया ऐसा सोच के चलो. सो आपका माइंड को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे दो, ड्रीम में भी पॉजिटिव आएगा. सो यू आर गोइंग टू गेट टॉप रैंक. सो इन द एग्जाम इट विल बी इजी फॉर यू टू रिकॉल, टू रिमेंबर, टू डू द एग्जाम. ठीक है बेटा. सो द ऑल योर हार्ड वर्क डन, दिस much time, long time comes to an end. That is, tomorrow is your big day. Stay cool, relax, be calm, and I know you are going to give your best. All the very best, guys. Okay, I hope everything is good.